So let us see XSS DOM here, right? Uh, what I can do is let me make low, right? Make it low. And what next I can do? Let me open this particular DOM XSS PDF, right? Here you can see uh, uh, मतलब अगर हम ये देखें किस तरीके से आपका DOM XSS काम करता है तो डॉम एक्सएसएस में आपके पास ये सब चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डॉम क्या है। तो डॉम इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट? एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये आपकी एक एपीआई होती है जावास्क्रिप्ट की, राइट? एंड हाउ दिस एपीआई वर्क्स, it is kind of powerful API and it has some powerful methods in it, right? इसको यूज़ कैसे करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के साथ तो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ओके, लेट्स टैकल द बीस्ट एज आई एम राइटिंग दिस, आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर। ओके, सो आप ये पढ़ सकते हैं साथ में। एंड व्हाट इज डॉम एक्सएसएस? सो डॉम एक्सएसएस जो होता है वो आपका सोर्स एंड सिंक के ऊपर वर्क करता है। सो नाउ व्हाट इज सोर्स एंड सिंक? सो सोर्स एंड सिंक इज जस्ट लाइक this thing. Let me go to my lab, right? And here you can see that whatever I select, है ना, जो भी मैं यहाँ पे select कर रहा हूँ वो मेरा कहीं पर जा रहा है। वो सेम चीज़ मेरे जावास्क्रिप्ट के थ्रू या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एपीआई के थ्रू कहीं पर ले जाया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा एंड ये मेरा लोकेशन में वो सॉरी मेरे यूआरएल में यूआरएल की लोकेशन पे जाके स्टोर हो रहा है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे अगर कोई आपकी यूज़र नेम एंड पासवर्ड की फील्ड है एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड में आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखते हैं जिस यूज़र नेम से आपने लॉगिन करा था उसका एक पॉपअप शो हुआ है, दैट इज hide here your username, right? Like username is you can take Ram, right? So hide here Ram. So this will be reflected on that particular pop-up, right? And if this thing is being performed using JavaScript DOM, then there can be a source and sink. मतलब कि जैसे जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड में जो आपने एंटर करा वहाँ पे जो ये आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड में जो आपने एंटर करा इस इनपुट को जो जावास्क्रिप्ट या जो डॉम ऑब्जेक्ट इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनपुट को हैंडल कर रहा है दैट विल बी सोर्स। एंड जो भी आपका पॉपअप में शो हो रहा है दैट इज सिंक। सो सोर्स एंड सिंक इज नथिंग बट कि मतलब आप कहीं से कुछ चीज़ उठा रहे हो एंड देन कहीं दूसरी स्टेज पर शो कर रहे हो, राइट? या किसी दूसरी जगह पर आप उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ डॉम। एंड अब जो आपका डॉम होता है वो आपके तीन तरीके के होते हैं, दैट इज एग्जीक्यूशन। अच्छा, डॉम तीन तरीके के नहीं होते हैं बट डॉम में आपके जो सिंक होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। तो आपके जो डॉम में जो मैं सोर्स एंड सिंक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका सोर्स ये है एंड सिंक इज दिस थिंग, राइट? सो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एंड अभी जो सोर्स एंड सिंक है, अब जो सिंक होता है मतलब आपको डॉम ऐसे नहीं मिलेगा कि जस्ट सोर्स एंड सिंक की फॉर्म में आपको और वहाँ पे डॉम के मेथड्स या ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं देन दैट विल मतलब आप उसको डॉम एक्सएसएस फाइंड कर सकते हो वहाँ पे। ऐसा नहीं है। होता ये है कि डॉम एक्सएसएस आप तब फाइंड कर सकते हैं जब आपके वनरेबल मेथड्स यूज हुए हुए हैं, right? So there is an execution sync, there is an location sync, there is uh, like let me show you this PDF. Three type of syncs: document sync, location sync and execution sync, right? तो आपके तीन तरीके के सिंक होते हैं और इन सिंक में जो हम अभी देखेंगे वो आपके सारे वनरेबल सिंक होंगे, मतलब वो आपके वनरेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे डॉम के, राइट? या वनरेबल मेथड्स होंगे।
इसी तरीके से यहाँ पे जो हम डॉम सोर्स देखेंगे वो हम ये चीज़ देखेंगे कि ये वनरेबल मेथड या सोर्सेज हैं या नहीं, राइट? ओके, so this will be your DOM, document object model. Okay, so this is a kind of DOM thing. Like there is some DOM element dot inner HTML. Like आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे लिखा यहाँ पे लिखा हो document dot write dot inner HTML, right? So here you can see, so dot inner HTML dot outer HTML dot insert adjacent HTML, all kind of these things will fall under your sync, and there is a location sync document.domain. So here you can see document.location, window.location.assign, window.location.replace, such kind of thing is, these things are your location sync, right? And how they are going to be used, we will see in DVWA, right? And there is an execution sync. So how execution syncs are there? In execution sync, we will have JavaScript code update its own code with data that we as an attacker enter into the system. In real life, we will rarely find these things unprotected. तो अगर ये unprotected होते हैं, then आप इनको यूज़ कर सकते हो malicious purpose के लिए, मतलब अपना कोड वगैरह एग्जीक्यूट कराने के लिए, right? So and these are your DOM sources that are vulnerable to DOM XSS, right? So these are ये सब आपके vulnerable sources हैं, and these are vulnerable sinks जो कि आपको मिल सकते हैं. अब यहाँ पे हम इसका पेज सोर्स चेक करते हैं. इन पेज सोर्स पे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, एंड जावास्क्रिप्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, if document.location.href index of default equals to, so यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ये कोड समझा देता हूँ. ये कोड क्या लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट में. सो जावास्क्रिप्ट में ये कोड लिखा है that whatever वैल्यू आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इन ऑप्शंस पे, इनमें से document डॉट राइट, ये आपके ऑप्शन टैग हैं जो कि आपके सिलेक्ट टैग के अंदर फॉल कर रहे हैं. सो सिलेक्ट टैग के अंडर में आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल बिकॉज ऑफ ऑप्शन टैग दैट इज बीन यूज इन योर एचटीएमएल, राइट? सो आप कोई भी यहाँ पे टैग यूज करोगे वो सारे इसके अंदर फॉल करेंगे, एंड विच एवर ऑप्शन यू विल यूज, लाइक आई यूज फ्रेंच, एंड हुएवर सिलेक्ट, मतलब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा जावास्क्रिप्ट इसको कहाँ लेके जाएगी, जावास्क्रिप्ट आपको आपकी इस चीज को यूआरएल में डिफॉल्ट इक्वल्स टू के आगे लगा देगी, राइट? दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर. जैसे ही आपने ऑप्शन टैग में से सिलेक्ट करा तो क्या हुआ यहाँ पे, आपने जैसे आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करा, एंड सिलेक्ट करते ही क्या होगा, document डॉट लोकेशन डॉट एच आर एफ. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डॉम, एंड यहाँ पे आपने डिफॉल्ट इक्वल्स टू के आगे आपने एक वेरिएबल लैंग नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, और उसको क्या वैल्यू दी कि उसकी एक सबस्ट्रिंग सिलेक्ट की जाए, और सबस्ट्रिंग कौन सी सिलेक्ट की जाए, डिफॉल्ट इक्वल्स टू, एंड डिफॉल्ट इक्वल्स टू के आगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आप क्या करवा रहे हो, जो भी आपकी लैंग वैल्यू है उसको ऐड करवा रहे हो, राइट? सो दिस इज काइंड ऑफ कोड रिटन हेयर, एंड हाउ वी कैन bypass this particular thing. Now we have some payloads here, payload all thing on payload all things, right? So now I have payloads here. What I can do is so मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपना पेलोड डाल सकता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ से ये चीज़ हटा हूँ एंड एंटर करूँगा, एंड यस you can see okay, I think I had taken alert from here, right? So this thing you can see my javascript has been मेरा javascript यहाँ पे रन हो चुका है. Okay, so
लेट मी सी कि यहाँ पे हम मीडियम लेवल पे किस तरीके से फाइंड करेंगे. And let me submit it. And when we move to XSS DOM, let me see the source. And source में हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि stripos default script not equals to false, header location question mark default equals to English, and if array key exists default. So देखो यहाँ पर हो क्या रखा है. So what happened here is direct script evocation is not allowed here, right? तो हम डायरेक्टली अभी जो हम पिछली बार जैसे हमने पेलोड दिया था वो अलाउड नहीं है. तो हम अब यहाँ पर पता है क्या कर सकते हैं. सिंपल हम ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर मैं इसका सोर्स कोड पे जाऊँ एंड यू सोर्स right. So where is my JavaScript? One second. uh, right, select it. Now let me see the page source, and here is your uh, JavaScript. So JavaScript is loaded when I made some uh, I made JavaScript use here क्योंकि JavaScript आपकी तभी लोड होगी जब आप उसको यूज़ करोगे, बिकॉज JavaScript इज़ अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज. और क्लाइंट साइड के जब क्लाइंट साइड पे चलती है तो वो पहले डाउनलोड होती है फ्रंट एंड सर्वर से आपके ब्राउज़र में, एंड देन ब्राउज़र में ही रन करती है. सो अब यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है एंड डायरेक्ट एवोकेशन नहीं रिक्वायर्ड है. तो हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन टैग को बंद करेंगे. एंड ऑप्शन टैग को बंद करने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट टैग को बंद करेंगे. एंड उसके बाद हम यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, राइट. सो जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू मेरी कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जाके स्टोर हो रही है. सो एट फर्स्ट मेरे को यहाँ पे ऑप्शन टैग बंद करना पड़ेगा. एंड देन ऑप्शन टैग बंद करने के बाद मैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट टैग बंद करूँगा, राइट. सो लेट मी ट्राई दिस थिंग. सो लेट्स तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन टैग बंद कर दिया. देन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट टैग बंद कर देता हूँ. एंड नाउ लेट मी टेक अ पेलोड फ्रॉम हियर. ओके, सो आई थिंक दिस मस्ट वर्क. Okay, so let me take this one, paste it here. Let's see. So ये यहाँ पर आपका XSS pop-up हो गया है, right? So this thing is being done in the medium level, right? Let us see what we have to do in high level. So let me go to my DVWA Security, hi, submit it, and let's move to your XSS DOM. And yes, you can इसके बाद हम Portswigger की labs भी देख सकते हैं यहाँ पे. And let me log in. Let's just log in here. And let's move to my to all labs, right? And let's see on my so these three labs are there. Let's see these two. Okay, after working on
your high. Okay, so what's happening in our, it's set for high security level, right? और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं यहाँ पे. सो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, अगर कोई भी इनपुट है आपके पास, इस देयर एनी इनपुट, यहाँ पर आपको, आप जो भी इनपुट दोगे तो क्या होगा, सिर्फ इन्होंने वाइट लिस्ट कर रखा है अलाउेबल लैंग्वेजेस को, उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते. राइट. जैसे हमने स्क्रिप्ट टैग वगैरह, हम वहाँ पे कुछ और इसके अलावा डाल ही नहीं सकते हैं. तो इसको बाईपास करने का हमारे पास ऑलमोस्ट कोई तरीका इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा है, बट आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, दैट इज़ क्या करें हम कि अगर जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश टैग यूज़ करता हूँ एंड लेट मी सिलेक्ट. ओके, एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करूँ मैं कि यहाँ पर मैं हैश दे दूँ एंड देन स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट. ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे दे के देख सकता हूँ. सो स्क्रिप्ट अलर्ट एंड लेट मी टू स्क्रिप्ट. सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अपने इनपुट के साथ यहाँ पर एक हैश भी डलवाया. और हैश से क्या हो रहा है, by adding hash to one of these select values you can execute code on the client side without worrying about the whitelisted values, right? So जैसा हमने यहाँ पे अपने कोड में देखा, तो अगर मैं यहाँ पे हैश लगा दूँ अपनी एक सिलेक्टेड वैल्यू के लिए, राइट. सो यहाँ पे हैश देने से क्या होगा, कमेंट आउट हो जाएंगी वैल्यूज, राइट. एंड कमेंट आउट जैसे ही होंगी, हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे कोड को रन कर देगी, राइट. तो बाद की वैल्यू, सॉरी, पहले की वैल्यू कमेंट आउट करने के लिए हमने यहाँ पर हैश दिया है एंड स्क्रिप्ट अलर्ट टू स्लैश स्क्रिप्ट, राइट. लेट्स सी ये काम करेगा या नहीं. एंड it didn't work. Why? Although we used hash here. What if I make a string? No, this didn't work as well. Script alert script. What if I make as big and b big? Similarly here, and enter it. No, it is not working. What if I use some different payload here from payload author. Let me copy this and let me paste it here. Enter. Oh no. All right. What if I add? Okay. And to the alert value to. And let's see. Don't know why it's not working. Okay. So yes, what you can do is this thing will work when मैंने यहाँ पे अपना वो पेलोड दिया एंड अब मैं यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा एंड यस यू कैन सी my payload is working now. So this is what
we have to do, right? And payload is not changing as you are using your select language, uh, as you are selecting language, right? Okay, so this is what we have in here. Let me go to DOM XSS in document.writesync using source, and अगर मैं यहाँ पर access lab करता हूँ, and what it is telling is document.writesync is there and source is location.search. Let's see how this is true. Okay, so यहाँ पर मेरी मशीन ओपन हो चुकी है, राइट? अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? So let me see what's happened here. मैंने सर्च किया कुछ, and now let me see my page source, and मैं जैसे ही यहाँ पे पेज सोर्स सर्च करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पूरी मेरी जावास्क्रिप्ट मेरे को नज़र आने लगती है, राइट? यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाया हुआ है ट्रैक सर्च नाम का, उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है क्वेरी, एंड कोई भी यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पर क्या करा हुआ है, इमेज सोर्स टैग दे रखा है, एंड इमेज सोर्स टैग में कुछ सर्च किया जा रहा है, और सर्च नहीं किया जा रहा बिकॉज देर इज अ पैरामीटर सर्च टर्म, सो देयर इज what they are doing is they are going to a particular URL, उस URL में एक tracker डॉट जिफ नाम की एक फाइल पर जाया जा रहा है, और उस फाइल में शायद एक पैरामीटर है सर्च टर्म नाम से, और उसकी वैल्यू सेट की जा रही है क्वेरी, राइट? एंड फिर ये फंक्शन आपका ख़त्म हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर एक क्वेरी वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, और वो क्वेरी वेरिएबल शायद एक ऑब्जेक्ट है URL सर्च पैरम नाम के किसी फंक्शन या मेथड का। देन उसके बाद यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करके डॉट गेट सर्च दिया जा रहा है। ओके, तो क्वेरी ना जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो भी हम यहाँ सर्च कर रहे हैं, जो भी जैसे मैंने यहाँ पे रैंडम कुछ सर्च किया, एंड जो भी मैंने यहाँ पे सर्च किया उसकी वैल्यू सेट कर दी जा रही है क्वेरी, राइट? एंड वो पेज पे सर्च भी किया जा रहा है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च डॉट गेट सर्च, राइट? सो जैसे ही कोई यहाँ पर कुछ भी रैंडम वेरिएबल या कुछ भी डालता है, वो सर्च किया जाएगा इस पेज पर, एंड क्वेरी वेरिएबल में उसकी वैल्यू सेट कर दी जाएगी। मतलब इस वक्त क्वेरी इक्वल टू GHC JGH है, राइट? देन इसके बाद अगर क्वेरी पैरामीटर एग्जिस्ट करता है, मतलब क्वेरी वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो ये फंक्शन रन कर दो, मतलब कि फिर उसके बाद ये फंक्शन रन किया जा रहा है, एंड हियर यू कैन सी जैसे ही तुम सर्च करते हो ये चीज़, तो यहाँ पर आप सेम वैल्यू को क्वेश्चन मार्क सर्च पैरामीटर में GHC JGH के फॉर्म में URL में देख सकते हो, राइट? सो दिस इज योर जावास्क्रिप्ट। नाउ अब यहाँ पर मेरे को एक पेलोड यूज करना है, एंड मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं इस जावास्क्रिप्ट में, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे डॉम सिंक एंड डॉम सोर्स ये देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो डॉम सिंक एंड सोर्स क्या है? सबसे पहले आप जो भी वैल्यू डाल रहे हो यहाँ पे डाल लो, एंड देन वो आपकी वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट? सो सिंक एंड सोर्स क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, राइट? क्या हम इसको वैलिडेट कर पा रहे हैं? So document dot write is your sink, and location dot search is your source. So here you can see, yes, location dot search is your source and document dot write is your sink. तो पहले आपकी वैल्यू यहाँ आ रही है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जा रही है, राइट? जो भी आप क्वेरी कर रहे हो वो आपकी पहले लोकेशन डॉट सर्च में जा रहा है, राइट? जो भी आप सर्च करोगे, जैसे मैंने रैंडम डेटा सर्च किया, तो वो पहले इस पर्टिकुलर डॉम में आएगा, एंड देन
फिर इसके बाद इस पर्टिकुलर डॉम सिंक में जाएगा, राइट, यही हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को यहाँ पे पेलोड देना है, तो लेट मी मूव टू माई पेलोड ऑल थिंग्स एंड लेट्स सी। पहले ये वाला पेलोड दे के देखते हैं। लेट्स कॉपी इट एंड पुट इट इन हियर, कंट्रोल V एंड लेट्स सी कि ये पेलोड यहाँ पे काम करता है या नहीं। नहीं, ये पेलोड आपका यहाँ पे काम नहीं करा। व्हाट इफ I take one of them and put it here, let me paste it and let's search. No, this also didn't work. Okay, what if I try some this kind of payload, right? And let me put it here. We and let's send it. Okay, so this worked, right? So yes, here my lab is also solved. Let me move to my second lab. Let me see what else is in here, right? DOM access in inner HTML sync using source location.search. All right, let me access this lab, and it is taking some time. Okay, so here is my lab, and what I can do is, let me search something, and here you can see there is sync which is inner HTML, and where here is source location.search, right? Let me validate using my DOM XSS PDF that both of these are vulnerable or not. So here you can see uh, whether we have, yeah, we have this inner HTML sync in document.sync. So this is kind of vulnerable. And here you can see that whether we have this particular source which we are discussing, that is uh, location.search. Do we have it here? We have location, right? So don't don't have to bother about search or not, but we have it location, right? So yes, both of them are vulnerable, and let's see how this thing is working. Let me uh, search something, and as soon as we search, let me see the page source. Here we have our JavaScript, and here you can see that function do search query. So there यहाँ पे आपको दिख सकता है कि एक सर्च क्वेरी नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, एंड इस सर्च क्वेरी फंक्शन में क्वेरी नाम का एक आर्गुमेंट पास किया जा रहा है, एंड देयर इज अ document dot get element by id. This is a kind of event handler with DOM, right? And there is search message dot inner html, and this is going to be set to query. Okay, so there is an id search message in this particular यहाँ इस HTML पेज में एक सर्च मैसेज नाम की एक आईडी यूज हुई है, और उसको पहले सर्च किया जा रहा है, और उसकी वैल्यू में डॉट इनर HTML से ओवरराइट कराया जा रहा है क्या, क्वेरी. ओके, सो here you can see that there is an id which is being used in HTML tag with this span tag, right? And id is set to search message, and what's happening is, हो ये रहा है कि जो भी क्वेरी में आपका होगा, जो भी यहाँ पे क्वेरी आर्ग्यूमेंट होगा, वो ही सर्च रिजल्ट फॉर के आगे आके जुड़ जाएगा, राइट? कैसे, किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया NCF, और जो भी मैंने NCF सर्च किया यहाँ पे 0 रिजल्ट फॉर NCF लिखा हुआ है. So this is being done using JavaScript, and this is quite a bad idea to do this thing using vulnerable sync. एंड अब ये वनरेबल सिंक कैसे, जैसे पिछले लैब में हमने सेम चीज़ देखी थी. कैसे देखी थी हमने यहाँ पे, जैसे वैर क्वेरी यहाँ पे मैंने करा, एंड वैर क्वेरी करके यहाँ पर अब क्या हो रहा है, सेम जैसे पिछली बार हुआ था
जो भी आपने सर्च किया वो क्वेरी के इक्वल जा रहा है, एंड जो और इस पेज पे सर्च किया जाएगा पहले, ठीक है। एंड जो भी आपने सर्च किया अ, वो आपका क्वेरी के बराबर हो गया, और क्वेरी के क्वेरी इक्वल्स टू एनसीएफ हो जाएगा जैसे इस केस में। एंड अगर क्वेरी कुछ भी है, मतलब क्वेरी में कुछ भी कंटेंट है, मतलब अगर ये वैल्यू ट्रू है, तो ये वाला फंक्शन रन कर दो, डू सर्च क्वेरी, और जैसे आप ये फंक्शन रन करोगे तो जीरो सर्च रिजल्ट फॉर दैट थिंग, राइट। सो दिस थिंग विल वर्क, ओके। एंड so this is kind of uh, sorry. So let me go to payload and let's use this one and see whether it will work or not. So let's paste it here, let's search it, and yes, so this thing worked, right? So since uh, this payload worked here, right, and here you can see we have successfully solved the lab. So this payload was able to uh, play with our JavaScript, right? And so DOM finding is quite interesting, right? And sometimes hard to, and you have to work upon your skills on how to find DOM access, right? So that's all for this particular video, right? Mm.